Very good afternoon, one and all. ऐकायला येतंय का? Yes, sir. ठीक आहे. So we have 27 admissions, but only 10 students have joined up till now. I don't know what is the reason. Initially, wrong link was pasted. Okay, so sorry for that. I hope you remember my last lecture. It was about the splitting of D term under octahedral and tetrahedral crystal film splitting. Let us start the same topic again. Okay. So is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there is one-to-one correspondence between the splitting of orbital and the splitting of energy terms. Okay. So as there is no splitting up S term, no splitting up, as there is no splitting up S orbital, no splitting up S term. As there is no splitting up p orbital, there is no splitting up p term. Since there is a splitting of d orbital under octahedral and tetrahedral cubic crystal field, in the similar manner, capital D term is also splitted. Okay, so how it is splitted? It is splitted into two sets of energy levels. One is doublet capital T2G and capital T2G and capital EG. Okay, wherever I am writing or spelling capital, it means the discussion is related to term, energy term. And wherever I am talking about small symbols, okay, EG, T2G, then that discussion is related to the orbitals. Okay. So I think ये हो गया था D1, D9 and D4, D6. Okay. So D1 and D9, both of them have same ground state term, that is doublet D. And how is the splitting of this doublet D? एक में जो होता है वो according to the same order of crystal field splitting of d orbital, and D9 में it is reverse. Okay, so why it is so, that I have already explained. If the promotion of electron is excitation of electron is taking place according to electron promotion, then the order is same as that of crystal field splitting order. And if excitation of electron from T2G to EG is taking place according to Hall inversion, then the order is reversed to that of crystal field splitting order. Okay, so in which environment? In octahedral environment. Tetrahedral environment में ये फिर से reverse हो जाता है. Okay, as you know, the splitting order of d orbital in tetrahedral environment is reversed to that of octahedral environment. You know it very well. d ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल मध्ये कसं होतं, T2G खाली EG वरती, बरोबर आहे. आणि सेम d ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल एन्व्हायरमेंट मध्ये कसे होतं, EG खाली T2G वर. का बरं होतं ते तुम्हाला माहिती आहे रिझन, that in octahedral environment ligands are approaching along the three mutually perpendicular coordinate axes. So inter-electronic repulsion with the electrons which are directly in the path of ligand will be much more, hence they rise their energy. Since T2G orbitals has their lobes in between the
axis, so their energy is lowered. But in tetrahedral environment, the ligands are approaching to the central metal ion, not along the axis. They are approaching from in between the axis. Okay. So since the ligands are approaching from in between the axis, the d sets and T2G sets of orbital, that is dxy, dyz and dxz, which have their lobes in direct path of ligand, will experience more repulsion. Hence T2G सेट का जो एनर्जी है वो ऊपर चले जाता है, और Eg जो कि along the axis रहते हैं, ligands approaching ligands से बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उसकी एनर्जी कम रहती है, तो वो नीचे रहते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द केस इन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G नीचे, Eg ऊपर, और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G ऊपर और Eg नीचे. ओके, as per as the splitting of d orbital is concerned. Okay, now same splitting is applied to the term also. So the rule is according to the electron promotion and hole inversion. Okay, तो ये आपको पता है what is mean by electron promotion, ये मैंने बताया था याद रखने के लिए. The orbital from which electron is excited, after excitation of electron, if that orbital is similar to any one of the remaining two orbital, then that is called as electron promotion. And during the excitation, the orbital from which the electron is promoted or excited, after excitation, if it is entirely different from the remaining two orbitals, then that process of excitation is called as hole inversion. And if electron promotion is taking place, order will be retained as that of crystal field splitting order. And if hole inversion is taking place, then order is reversed to that of crystal field splitting order. Okay, तो T2G और सॉरी d ऑर्बिटल का क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. d ऑर्बिटल का क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑर्डर कैसा है? T2G ऊपर, T2G नीचे, Eg ऊपर. किसमें? ऑक्टाहेड्रल में. टेट्राहेड्रल में कैसा है? T2G ऊपर और Eg नीचे, रिवर्स रहता है. ओके, तो यहाँ पर भी वैसे होगा. अब ये D1 सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रमोशन है या होल इन्वर्शन है? पढ़ाया था मैंने, फिर से पढ़ेंगे. ओके, डोंट वरी, क्योंकि ये जब तक प्रैक्टिस हो जा नहीं होती आपकी, आप कुछ नहीं सीखोगे. रट्टा मारने से कोई मतलब नहीं होगा. तो फिर से एक बार उसका जिक्र करते हैं. ठीक है, 2 क्लास भी लेने पड़ेंगे मुझे आज, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू जस्ट हैव द सेम मेंटालिटी up to 4 o'clock or 3:30 we will continue the class. Okay, so this is what your D1 system. In D1 system, one electron is present here. So after excitation of electron from T2G to Eg, new electronic configuration will be achieved in which T2G के तीनों ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहते हैं और Eg में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है. ओके, अब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से गया? ये वाले. तो ये वाले ऑर्बिटल को आपको देखना है इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाने के बाद. इज इट सेम or similar to remaining two orbitals or any one of the remaining two orbitals? Yes. After excitation, it becomes vacant. So there are already vacant two orbitals. So it is similar to remaining two orbitals. Hence, it is called as electron promotion. And the process of excitation is called as electron promotion. And if the electron promotion is happening, then order is retained as that of crystal field splitting order. Okay. तो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग ऑर्डर कैसा है? T2G नीचे, Eg ऊपर ऑक्टाहेड्रल में. सो T2G नीचे, Eg ऊपर. ओके, क्लियर कट है. अब D9 सिस्टम है. अब D9 सिस्टम में देखो क्या होता है. D9 सिस्टम में 9 इलेक्ट्रॉन T2G6 और Eg3 में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. बराबर है.
तो T2G में तो कोई होल नहीं है या कोई वैकेंसी नहीं है, पर EG के पास एक होल है. नाउ since it is electronic spectra, there is excitation of electron from lower energy state to higher energy state. So let us this electron which is to be excited in this orbital, इस ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करने जा रहे हैं. ओके, तो एक्साइट करने के बाद हमको जो भी नया कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो ये वाला मिलेगा, है ना. Like this new configuration will be achieved EG full, EG full और T2G, ये दोनों T2G फुल रहते हैं जबकि लास्ट वाला T2G half filled रहता है. ओके, now after excitation of electron, the orbital from which electron is excited, so this is the orbital from which electron is excited. If after excitation, if it is similar to remaining two or any one of the two orbital, then the process is electron promotion. If it is entirely different, process is hole inversion. So this is half filled, remaining two are completely filled. So it is entirely different from remaining two orbitals. Hence, the process of excitation is called as hole inversion. And since this is an example of hole inversion, order will be reversed to that of crystal fill splitting order. Hence, for D9 system, the splitting of D term will be T2G नीचे और EG ऊपर. Okay, so doublet T2G to higher energy state, doublet EG to lower energy state. Why? Because it is happening according to the hole inversion. Okay, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, octahedral splitting of D term. So for tetrahedral splitting of D term, again this order is reverse. So tetrahedral doublet D D1 के लिए फिर से T2G नीचे ऊपर EG नीचे हो जाएगा और टेट्राहेड्रल D9 के लिए ये T2G नीचे EG ऊपर. तो मैं बताऊंगा आपको, आप आगे चल के बताऊंगा. ओके, अभी कंफ्यूज मत हो. नाउ D4 सिस्टम के पास आओ. D4 सिस्टम में tell me whether it is electron promotion or hole inversion. Now you should tell. Okay, I am expecting from your side. For a D4 system, what is the electron excitation process, whether it is due to electron promotion or hole inversion? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजोगे, होल इन्वर्शन. हाँ, तो ऊपर भेजने के बाद आपको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. ओके, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा. कैसा? यहाँ पे ये दो है और the orbital from which electron excited is empty. Now there is no empty orbital. See, this is half filled, this is half filled, so there is no empty orbital. Hence, it is entirely different from remaining two orbitals, and the process is called as hole inversion. होल इन्वर्शन. And since it is the hole inversion, the splitting of D term is reversed or will have reverse order to that of crystal fill splitting. Okay, मतलब EG नीचे T2G ऊपर. Okay, so energy difference minus 6 dq plus 4 dq or point minus 0.6 delta or plus 0.4 delta. Okay, complete ये जो difference रहता है वो 10 dq और delta हो रहता है. So and again D6 system, for D6 system if you calculate it will come electron promotion or hole inversion. So definitely it will be electron promotion for a D6 system. Okay, so since it is example of electron promotion, order is written, that is T2G नीचे EG ऊपर. ओके, तो ये हो गया D ऑर्बिटल के लिए. तो अब चलते हैं कंबाइंड ऑर्बिटल डायग्राम. ये हो गया सेपरेट ऑर्बिटल डायग्राम. ओके,
अब कंबाइन ऑर्गेल डायग्राम यहाँ पे है, पता है, ठीक है, ये है आपके कंबाइन ऑर्गेल डायग्राम. Now, what is mean by orgeal diagram actually? So, orgeal diagram, it is nothing but the plot of energy terms, okay, versus inter-electronic repulsion. So, this is your energy term and this is your inter-electronic repulsion, okay. So, this capital D term is same for D1, D4, D9 and D6. So if you put this capital D term here, so one diagram, एक डायग्राम इस तरीके से मिलेगी आपको, यहाँ पे Eg ऊपर और T2G नीचे है और लेफ्ट हैंड साइड में उसके रिवर्स है. ओके, तो ये राइट हैंड साइड वाली डायग्राम जो है वो क्या इंडिकेट करती है? जैसे कि राइट हैंड साइड वाली डायग्राम क्या इंडिकेट करेगी? इट विल octahedral दी octahedral splitting of D1 and D6 octahedral. Which system? D1 system and D6 system d6 octahedral. बराबर है. For D1 you have to write doublet D. For D6 you have to write quartet D. Okay, quartet D, इसका फर्क है सिर्फ, तो वो लिख सकते हो आप. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये हो गया D1 का, और अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो ये हो गया D4 D6 सिस्टम का. ओके, तो राइट हैंड साइड डायग्राम जो है वो है octahedral for the octahedral splitting of D1 and D6 सिस्टम, दोनों के लिए सेम रहेगा. और लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम कौन सा रहेगा? D1 सॉरी D4 और D9 octahedral के लिए रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम मतलब T2G ऊपर Eg नीचे, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए रहेगा. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Eg T2G. अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, सो राइट हैंड साइड डायग्राम इज फॉर D1 D6 octahedral, left hand side diagram is for D4 D9 octahedral. Now if I would like to plot the same diagram for tetrahedral complexes, so tetrahedral complexes में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है. तो क्योंकि वो रिवर्स होता है तो ये सब रिवर्स हो जाएगा. मतलब जो पहले D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए था वो अब D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगा. मतलब T2 T2 और E, क्योंकि ये इरेज होता है ना, ये इरेज होता है. टेट्राहेड्रल में देयर इज नो G टर्म. ओके, T2 और E रहेगा है सिर्फ ये. So this is the diagram for tetrahedral splitting of D term. Okay, so right hand side diagram indicates D4 D9 tetrahedral. Left hand side diagram indicate D1 D6 tetrahedral. तो सीधा सीधा है, नो कंफ्यूजन. जो ऑक्टाहेड्रल के लिए रहेगा उससे अपोजिट टेट्राहेड्रल के लिए रहेगा. बराबर है. मतलब T2G नीचे Eg ऊपर, अगर ये D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए है तो सेम डायग्राम विल बी फॉर D4 D9 टेट्राहेड्रल. Eg नीचे T2G ऊपर, अगर ये D4 D6 octahedral के लिए है तो सेम डायग्राम omitting G term will be for D1 D6 tetrahedral. Okay, so you have to keep it this in your mind very clearly. Do you have any confusion with this? Is there any confusion regarding this to anyone?
You just remember the splitting of d orbital, okay, in octahedral and tetrahedral splitting crystal field. ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे Eg ऊपर रहता है d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में, तो टेट्राहेड्रल में उससे रिवर्स रहता है, Eg नीचे T2G ऊपर। क्यों? मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन क्यों का, आंसर बताया क्यों। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग में ligands are approaching towards central metal ion along the three mutually perpendicular coordinate axes, okay. So dx square minus y square and dz square, these are the two sets of orbital which are called as Eg orbital. They will have their lobes in the direct path of ligand. Hence, the electrons, if they are present in such orbitals, they will experience higher interelectronic repulsion. Hence, their energy increases. Whereas the dxy, dyz and dxz set of orbital, which is termed as T2G set of orbital, they will be present in between the axes. So ligands are approaching far away from these orbitals, hence they will stabilize by T2G. So T2G नीचे Eg ऊपर। टेट्राहेड्रल में रिवर्स रहता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ligands they are not approaching along the axis, they are approaching from in between the axis, okay. So since the orbital whose lobes are in direct path of ligand, that means dyz, dxz and dxy, ये जो T2G सेट के ऑर्बिटल है जिनके लोब लिगैंड्स के डायरेक्ट पाथ में है, अगर इनमें अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो दे विल एक्सपीरियंस मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हेंस देयर एनर्जी इंक्रीजेस। सो T2G ऊपर Eg नीचे, ओके। सो दिस इज व्हाट द सिंपल रीजन व्हाई द स्प्लिटिंग ऑर्डर इज रिवर्स टू दैट ऑफ टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, इसका टेट्राहेड्रल का। सो व्हाट यू हैव लर्न अप टिल नाउ, you have learned that d4, sorry, d1 d9 same ground state term, d4 d6 same ground state term, d1 d9 का ground state term क्या है, डबलेट d, d4 d9 का ground state term, d4 d6 का ground state term क्या है, quartet d, d1 d9 डबलेट d, d4 d6 quartet d, ओके। तो अगर मुझे इस डायग्राम को D1 का डायग्राम बनाना है, D1 का डायग्राम, तो मैं कैसा करूंगा, हाउ आई विल डू दिस D1 डायग्राम। So if this I would like to make a diagram of D1, then I will write doublet D here, okay, doublet D here, और T2G नीचे, EG ऊपर, और T2 doublet T2G, सॉरी डबलेट T2 डबलेट E डबलेट डबलेट, ये सब डबलेट लिखूंगा मैं। तो ये कौन से सिस्टम का डायग्राम हो गया, राइट हैंड साइड वाला डायग्राम कौन से सिस्टम का हो गया, ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टल फिल फिटिंग, तो ये हो गया D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 ऑक्टाहेड्रल, बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला D9, sorry, okay, now it is okay, D9 octahedral, D9 octahedral, बराबर है। So right hand side diagram is the diagram for D1 octahedral, left hand side diagram which is opposite order reverse, ये हो गया D9 octahedral. Now if I would like to make a diagram for D4, then what you will do, you just erase doublet, you just erase doublet, doublet को erase करो और उसके जगह पे क्या करो, क्वार्टेट रखो, क्वार्टेट 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 और क्वार्टेट। सो ये कौन सा डायग्राम हो जाएगा, ये होगा D6 का,
ऑक्टाहेड्रल और ये हो गया D4 का ऑक्टाहेड्रल, बराबर है। तो D4 के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम जिसमें Eg नीचे T2G ऊपर, क्योंकि D4 सिस्टम में होल इन्वर्शन है तो ऑर्डर इज रिवर्स। D6 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन प्रमोशन है, सो ऑर्डर विल बी सेम, सो T2G नीचे Eg ऊपर। ओके, तो ये है आपका D1 D6 ऑक्टाहेड्रल और ये है आपका D9 D4 ऑक्टाहेड्रल। ओके, अब इसको टेट्राहेड्रल बनाते हैं। तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या होगा, सब रिवर्स हो जाएगा, उल्टा पाल्टा। मतलब ये D1 D6 ऑक्टाहेड्रल के लिए था, तो D1 D6 टेट्राहेड्रल के लिए कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा। और ये D4 D9 ऑक्टाहेड्रल के लिए था, तो D4 D9 टेट्राहेड्रल के लिए कौन सा हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड वाला डायग्राम हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो यू जस्ट कीप इट इन माइंड, इतना याद रखो। अब ये हो गया डी ऑर्बिटल का या डी टर्म का स्प्लिटिंग। अब चलते हैं एफ टर्म के पास। ओके, नाउ हाउ द स्प्लिटिंग ऑर्डर ऑफ एफ टर्म इज, now splitting order of eff term is governed by again same rule, that is electron promotion and hole inversion. Okay, so what is the order of splitting of d orbital under f orbital under crystal field? Hmm? What is the order of f orbital under crystal field? क्या रहता है? So it is like this. Hmm? Order is like this. f orbital. So f orbital 7 रहते हैं. 7 orbitals are categorized into 3 sets. One orbital A to G and remaining 6 orbital A to G, remaining 6 orbital 1 T to G 3 का, और ये T1G 3 का. Okay, similarly this f orbital is splitted, that is T1G, then T2G, then A2G, A2G. Okay, is that clear? What is the order of splitting of f orbital under octahedral crystal field? It's like this, what I have told. So this T2G is destabilized by 0.6 delta O. T1G is destabilized by 0.6 delta O. T2G is destabilized by minus 0.2 delta O, and this A1G is stabilized by minus 1.2
टू डेल्टा ओ, ओके, 1.2 डेल्टा ओ। तो इसका ये जो रहता है ये वाला, दिस पोर्शन इज 10 डी, ओके, ये वाला पोर्शन जो है वो है 10 डी क्यू रहता है। विच वन? दिस वन 10 डी क्यू और डेल्टा माइनस 1.2 minus 0.2, so it is become 1, it will become 1, okay. So delta, so this is the order of splitting of f orbital, a2g नीचे, t2g भी नीचे, t1g ऊपर. So this is the regular order of splitting of f orbital. Now what happens to the splitting of f term? What happens to the splitting of f term? Okay, f term का splitting कैसे रहता है? f term का splitting कैसे रहेगा? f term किसके लिए होता है? d2 के लिए होता है, d2 के लिए, ओके। तो d2 में क्या है? d2 में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले d ऑर्बिटल में कैसे रहते हैं? ऐसे रहेंगे, बराबर है, इस तरीके से रहेंगे। Now one electron is excited to Eg. After excitation, new electronic configuration will look like this. ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन और नीचे में एक इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल से प्रमोट हुआ, एक्साइट हुआ? ये मिडल वाले। सो दिस, look at this middle orbital from where the electron is excited. Is it similar to remaining any one of the orbital? Yes, it becomes empty. So there is empty orbital, okay. So it is not entirely different, it is similar to one of the remaining two orbital. Hence the process is इलेक्ट्रॉन प्रमोशन। प्रोसेस कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन प्रमोशन का प्रोसेस होगा, बराबर है। सिंस द प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन प्रमोशन, ऑर्डर इज रिवर्स टू दैट ऑफ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑर्डर। यप ऑर्बिटल के लिए, and if the excitation of electron is taking place according to Hall inversion, then order is retained as that of crystal field splitting order, okay. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आपने याद रखे तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है। फॉर d orbital, sorry, for the splitting of d term, if it is happening according to electron promotion, order is retained. If it is happening according to electron Hall inversion, order is reverse for d term. For f term, if the excitation is taking place according to electron promotion, order is reverse to that of crystal field splitting order. And if excitation is taking place according to Hall inversion, order is retained as that of crystal field splitting order. So what is the crystal field splitting order for the d orbital, f orbital splitting? A2g नीचे, फिर T2g और ऊपर में T1g, ओके। सो दिस इज द रेगुलर ऑर्डर। सो D2 के लिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रमोशन, सो ऑर्डर इज रिवर्स टू दैट ऑफ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग ऑर्डर। सो एफ ऑर्बिटल ये है, एफ ऑर्बिटल ये है, तो T2g सबसे नीचे आएगा, फिर T1g सबसे नीचे आएगा, फिर T2g ऊपर जाएगा और A2g सबसे ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बराबर है, isn't it? Yes. Now D2 और D8 के लिए सेम रहता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आते हैं D2 के लिए, कंसिडर करते हैं क्या होता है फॉर D2। सो D8 के लिए। सो D8 में क्या होगा, सेम अगर करके देखना है आपको सबको, ठीक है। D8 के लिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होता है या होल इन्वर्शन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होता है या होल इन्वर्शन होता है, कैलकुलेट करो फॉर D8। सो D8 में T2G6Eg2 इस तरीके का रहेगा मेरे ख्याल से, बराबर है। Like this is your D8 system. So one of the electron is excited to here. So after excitation, you will get new electronic configuration like this. Okay, and this T2G electronic configuration will appear like this. Like this it will appear. So this is the orbital from where electron is excited. So is it same as that of remaining two or entirely different? It is entirely different. Okay, it is half filled, so there is no such half filled orbital, okay, in this set. So therefore it is whole inversion, and since it is whole inversion, the splitting of F term is same as that of crystal field splitting order. Okay, so what is the crystal field splitting order? A2G नीचे, T2G नीचे, E1G ऊपर. Okay, so this will be the diagram for D8 system. T2G नीचे, sorry A2G नीचे, T2G नीचे और T1G ऊपर. Okay, so order is retained as that of crystal field splitting order. Same thing is for D3 and D7. So D3 के लिए it will be whole inversion. So again D3 के लिए और D8 के लिए same diagram रहेगा, और D7 के लिए it will be again due to electron promotion. Since it is electron promotion, so D2 and D7 they will have same diagram. Okay, so this orbital diagram for the splitting of F term has been given in the next slide as like this. Yeah, okay. So this is your F term. So F term is split into T1G, T2G, A2G, and A2G, T2G, and T1G. Okay, T1G. रिजाइन करो सब लोग, हाँ, थोड़ा सा F ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग बताना है मुझे.